On January 24, 2023, the Doomsday Clock, DDC, was set at 90 seconds to midnight. This was closer to qiyamat than ever before. According to the Bulletin of Atomic Scientists, BAS, the new setting was due largely but not exclusively to Russia's invasion of Ukraine and the increased risk of nuclear escalation. The other reasons cited were the climate crisis and the breakdown of global norms and institutions which could contain the risks of advancing technologies and biological threats such as COVID-19. The DDC reset was announced on the eve of the anniversary of Russia's invasion of Ukraine. Accordingly, Ukraine displaced global warming and the nuclear threat as the foremost threat to mankind, and Russia displaced the corporate capitalist system as the chief villain. Unfortunately, the highly respected BAS appears to have allowed itself to be hijacked by the US-led propaganda apparatus. There is no doubt Russia's invasion of Ukraine was illegal, indeed criminal, no matter what the provocation. And provocation was indeed provided to ensure Putin would have no option but to respond in the way he did. None of this is indicated in the BAS report. None of this excuses Russia. Equally, none of this should excuse the deliberate and carefully planned provocation of Russia by the US and NATO. By choosing to ignore this, the BAS has done itself and its readers a disservice. The US is determined not to allow the restoration of peace in Ukraine. It wants to defeat and humiliate Russia, which is what the Ukraine conflict is all about. It wants regime change in Moscow. It wants to dismantle the strategic partnership of Russia and China, which is the major challenge to its global hegemony. The US is not interested in global peace if it is not based on US global hegemony. Similarly, it is not interested in prioritizing the challenge of climate change unless it is within the context of US global hegemony. The stakes are no longer national, geopolitical, or geoeconomic. The US is providing Ukraine with Patriot missiles that threaten targets deep within Russia. In turn, Russia may target US personnel training Ukrainian operators of the missiles. In such an event, the US will inevitably respond. Escalation is guaranteed. Both the US and Russia are nuclear weapons superpowers. Neither have a reliable first strike capability against the other. However, if one or both sides feel they have developed such a capability, the temptation to strike before the other does so could become irresistible. Detaching the Donbass and Crimea from Russia, expanding NATO to the borders of Russia, and compelling Europe to abandon energy cooperation with Russia in an effort to bankrupt it are part of the larger US strategy to isolate China and halt its emergence as the principal challenge to US global hegemony. Is this a scenario in which any of the COP targets to meet the challenge of impending climate catastrophe can be achieved? A US military general predicts war between the US and China by 2025. The US is apparently less concerned about what climate warming will do to human civilization by 2050 than what the balance of power between the US and China will be by 2050. It wants to strike while it is still the global supremo. According to Noam Chomsky, President Biden has declared virtual war on China, and Congress is seething at the bit to break the strategic ambiguity that has maintained peace regarding Taiwan for 50 years. Just as it provoked the Russian invasion of Ukraine, it appears determined to provoke China with regard to Taiwan, knowing that China will never countenance Taiwan becoming irreversibly independent, thereby strategically confining China within the South China Sea with all its consequences for China as a global economic power. This would bring about massive political instability in China with all its consequences for Asia and the rest of the world. Bending the knee to the global hegemon may be rational from a realpolitik point of view. But it no longer makes sense. The stakes are no longer national, geopolitical, or geoeconomic. They are global and existential. The world has to begin to come together in peaceful cooperation and competition to meet, mitigate, and minimize the colossal challenge of global warming and its thousands of lethal offshoots. However, it has to first reverse what is happening in order to begin.
This will require the non-superpowers of the world to initiate and organize discussions and movements to persuade global public opinion to stop the masters of the universe from destroying the world. They will need to closely interact and coordinate with similar movements in the developed world. In its more balanced 2022 report, the BAS referred to a corrupted information ecosphere that undermines rational decision-making as a third existential threat after climate warming and the nuclear threat. Chomsky, moreover, observes if we don't have the possibility of rational discourse of major issues, then nothing else matters, we're finished. But today's incessant media manufactures information, indignation, outrage and hate which obliterate the possibilities for rational discourse and compromise, without which challenges will not even be addressed, let alone overcome. The IMF descends upon Pakistan when it is faced with economic calamity and its political leaders happily waste time in litigation and mutual imprecations. They will gladly accept the IMF's tough love as long as it requires neither radical structural change nor poverty reduction as a conditionality. Such financial benefactors gladly provide a fish a day while not insisting on any learning to fish. How will such a Pakistan set an example on how to address any challenge? How will it prioritize education, rationality, science, justice, compromise, cooperation and tolerance as the hallmarks of its faith? How will it combat terrorism if it cannot publicly denounce terrorist organizations that murder Muslims at prayer in mosques as beyond the pale of Islam? How will it fashion a climate politics in place of realpolitik? How will it facilitate movements to mitigate threats listed by the BAS and help push the DDC away from striking midnight? There is still time for actions to provide hopeful answers. The writer is a former ambassador to the US, India and China and head of UN missions in Iraq and Sudan. Published in Dawn, February 4, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. 24 जनवरी 2023 को डूम्सडे क्लॉक DDC 90 सेकंड से आधी रात तक मुकर्रर की गई थी। ये पहले से कहीं ज्यादा क़यामत के करीब था। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स BAS के मुताबिक नई तरतीब बड़ी हद तक लेकिन खास तौर पर यूक्रेन पर रूस के हमले और जोहरी कशीदगी के बढ़ते हुए खतरे की वजह से नहीं थी। दीगर वजूहात में आब हुआ का बहरान और आलमी उसूलों और इदारों का टूटना शामिल है जो टेक्नोलॉजीज और हयातियाती खतरात जैसे कोविड-19 को आगे बढ़ाने के खतरात पर काबू पा सकते हैं। DDC रिसीट का ऐलान यूक्रेन पर रूस के हमले की बरसी के मौका पर किया गया था। इसके मुताबिक यूक्रेन ने ग्लोबल वार्मिंग और जोहरी खतरे को इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया और रूस ने कारपोरेट सरमायादाराना निज़ाम को मरकजी विलन के तौर पर बेदखल कर दिया। बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि इंतहाई काबिल एहतराम BAS ने खुद को अमेरिका की ज़ेर क़यादत प्रोपेगेंडा निज़ाम के ज़रिए हाईजैक करने की इजाज़त दे दी है। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन पर रूस का हमला गैर कानूनी था, वाकई मुजरमाना था, चाहे इश्तियाल अंगेज़ी कुछ भी हो। और दर हकीकत इश्तियाल अंगेज़ी इस बात को यकीनी बनाने के लिए फराहम की गई थी कि पुतिन के पास इसके सिवा कोई चारा न हो कि वो इस तरह जवाब दे जिस तरह उन्होंने दिया था। BAS की रिपोर्ट में इनमें से किसी की निशानदेही नहीं की गई है। इनमें से कोई भी उज़्र रूस को नहीं देता। इसी तरह इनमें से किसी को भी अमेरिका और नेटो की तरफ से रूस के खिलाफ जानबूझकर और एहतियात से मंसूबा बंद इश्तियाल अंगेज़ी को मुआफ़ नहीं करना चाहिए। इसको नज़रअंदाज करने का इंतखाब करके BAS ने खुद को और अपने कारीन को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका यूक्रेन में अमन की बहाली की इजाज़त न देने के लिए पुरज़्म है। वो रूस को शिकस्त देना और उसकी तज़लील करना चाहता है, यही यूक्रेन का तनाज़ो है। वो मास्को में हुकूमत की तब्दीली चाहता है। वो रूस और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को ख़त्म करना चाहता है, जो उसकी आलमी बालादस्ती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अमेरिका को आलमी अमन में कोई दिलचस्पी नहीं है अगर ये अमेरिकी आलमी बालादस्ती पर मबनी नहीं है। इसी तरह इसे मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज को तरजीह देने में कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक कि ये अमेरिकी आलमी बालादस्ती के तनाजुर में न हो। दाव अब कौमी,
जोग्राफियाई और जोग्राफियाई इक्तिसादी नहीं है। अमेरिका यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल फराहम कर रहा है जो रूस के अंदर अहदाफ के लिए खतरा है। इसके बदले में रूस यूक्रेनी ऑपरेटर्स को मिसाइल ओहे की तरबियत देने वाले अमेरिकी अहलकारों को निशाना बना सकता है। ऐसी सूरत में अमेरिका लाजमी तौर पर जवाब देगा। कशीदगी में इजाफे की जमानत है। अमेरिका और रूस दोनों जौहरी हथियारों की सुपर पावर हैं, न ही दूसरे के खिलाफ काबिल एतमाद फर्स्ट स्ट्राइक की सलाहियत है। ताहम अगर एक या दोनों फरीक ये महसूस करते हैं कि उन्होंने ऐसी सलाहियत पैदा कर ली है तो दूसरे के ऐसा करने से पहले हमला करने का लालच नाकाबिल तस्खीर हो सकता है। डॉनबास और क्राइमिया को रूस से अलग करना, नेटो को रूस की सरहदों तक फैलाना और यूरोप को रूस के साथ तवानाई के शोबे में ताउन तर्क करने पर मजबूर करना ताकि इसे दिवालिया करने की कोशिश की जा सके, चीन को तन्हा करने और अमरीकी आलमी बालादस्ती के लिए सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर उभरने से रोकने की वसीतर अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। क्या ये एक ऐसा मंजरनामा है जिसमें आने वाली आबोहवा की तबाही के चैलेंज से निमटने के लिए COP के अहदाफ में से कोई भी हासिल किया जा सकता है? एक अमरीकी फौजी जनरल ने 2025 तक अमरीका और चीन के दरमियान जंग की पेशगोई की है। अमेरिका को इस बात की कम फिक्र है कि 2050 तक मौसमियाती दर्जा हरारत इंसानी तहजीब पर क्या असरात मुरतब करेगा। 2050 तक अमेरिका और चीन के दरमियान ताकत का तवाज़ुन क्या होगा। वो हड़ताल करना चाहता है जबकि वो अब भी आलमी सुप्रीमो है। नोम चोम्स्की के मुताबिक सदर बाइडेन ने चीन के खिलाफ मजाजी जंग का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस इस तस्वीराती इबहाम को खत्म करने की कोशिश कर रही है जिसने 50 साल से ताइवान के बारे में अमन बरकरार रखा है। जिस तरह इसने यूक्रेन पर रूसी हमले को उकसाया, इसी तरह वो ताइवान के हवाले से चीन को मुश्तइल करने के लिए पुरज़्म नजर आता है, ये जानते हुए कि चीन कभी भी ताइवान को नाकाबिल तलाफी तौर पर आज़ाद होने का मुतहम्मिल नहीं करेगा और इस तरह चीन को स्ट्रेटेजिक तौर पर बुहेरा जुनूबी चीन के अंदर महदूद कर देगा, जिसके तमाम नताइज चीन को आलमी इक्तिसादी ताकत के तौर पर चीन पर मुरतब होंगे। इससे चीन में बड़े पैमाने पर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा जिसके तमाम नताइज एशिया और बाकी दुनिया पर मुरतब होंगे। आलमी बालादस्ती के सामने घुटने झुकाना हकीकी सियासी नुक्ता नज़र से मंतकी हो सकता है, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है। दाव अब कौमी, जोग्राफियाई और जोग्राफियाई इक्तिसादी नहीं है, वो आलमी और वजूदी हैं। ग्लोबल वार्मिंग और उसके हज़ारों मुहलिक असरात के बड़े चैलेंज से निमटने, कम करने और कम से कम करने के लिए दुनिया को पुरअमन ताउन और मुसाबकत में इकट्ठा होना शुरू करना होगा। ताहम शुरू करने के लिए सबसे पहले जो कुछ हो रहा है उसे पलटना होगा। इसके लिए दुनिया की गैर सुपर पावर्स को आलमी राय आमा को कायल करने के लिए मुबाहसों और तहरीकों का आगाज और मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत होगी ताकि कायनात के मालिकों को दुनिया को तबाह करने से रोका जा सके। उन्हें तरक्की याफ्ता दुनिया में इसी तरह की तहरीकों के साथ करीबी तौर पर बातचीत और हम आहंगी करने की ज़रूरत होगी। BAS ने अपनी 2022 की ज़्यादा मुतवाज़िन रिपोर्ट में मौसमियाती दर्जा हरारत और जौहरी खतरे के बाद तीसरे वजूदी खतरे के तौर पर एक खराब इंफॉर्मेशन इकोस्फेयर जो अक्ली फैसला साजी को कमज़ोर करता है का हवाला दिया। इसके अलावा चोम्स्की का कहना है कि अगर हमारे पास अहम मसाइल पर अक्ली गुफ्तगू का इम्कान नहीं है तो फिर कुछ और अहमियत नहीं रखता, हम ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन आज का मुसलसल मीडिया मालूमात, गुस्सा और नफरत पैदा करता है जो अक्ली गुफ्तगू और समझौते के इम्कानात को ख़त्म कर देता है, जिसके बगैर चैलेंजों पर काबू पाना तो दूर की बात, हल भी नहीं हो सकेगा। IMF पाकिस्तान पर इस वक्त उतरता है जब उसे माशी बहरान का सामना करना पड़ता है और उसके सियासी रहनुमा खुशी खुशी कानूनी चाराजोई और बाहमी तनाज़ात में वक्त ज़ाय करते हैं। वो IMF की सख्त महब्बत को खुशी से कबूल करेंगे जब तक कि इसके लिए ना तो बुनियादी ढांचा जाती तब्दीली की ज़रूरत है और ना ही गुर्बत में कमी को शर्त के तौर पर। इस तरह के मालिक मुखैर खुशी खुशी एक दिन में एक मछली फराहम करते हैं जबकि मछली पकड़ना सीखने पर जोर नहीं देते। ऐसा पाकिस्तान किसी भी चैलेंज से निमटने की मिसाल कैसे कायम करेगा? वो तालीम, मकबूलियत, साइंस, इंसाफ, समझौता, ताउन और रवादारी को अपने अकीदे की निशानियों के तौर पर किस तरह तरजीह देगा?
अगर वो इन दहशतगर्द तंजीमों की खुलेआम मजम्मत नहीं कर सकती जो मसाजिद में नमाज के दौरान मुसलमानों को कत्ल करती हैं, तो वो दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे करेगी? ये हकीकी सियासत की जगह अब हुआ की सियासत को किस तरह तश्कील देगा? ये BAS की तरफ से दर्ज खतरात को कम करने के लिए नकलो हरकत को किस तरह आसान बनाएगा और DDC को आधी रात को निशाना बनाने से दूर करने में मदद करेगा? अभी भी वक्त है कि इक़दामात पर उम्मीद जवाबात फराहम करें। मज़मून निगार अमरीका, भारत और चीन में साबिक़ सफ़ीर और इराक और सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशनों के सरबराह हैं। अख़ज़ शदा बतारीख़ 4 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.